Inclusion is not built through just declarations, it is built through everyday behavior, actions. Something that I loved that she emphasized upon. It's also through trust, through listening, and through how people experience belonging in ordinary moments. Don't look for the big ones, it'll come to you. And that leads beautifully into our next session. Our next workshop explores how stronger communities are intentionally created, sustained, and nurtured. Leading this conversation is someone widely respected for her deeply human-centered approach to leadership and emotional intelligence. Ladies and gentlemen, in your round of applause, please welcome Shireen Naqvi. Fahad, Adil, Amna, and the whole team, PSTD, congratulations once again, and on the 60th years as well. You've been part of that, Fahad. Must be feeling really good about making this transition and handing over to the next one as well. Bisma also. Bisma is the soul behind all of this. Lovely seeing you, Musharraf, again. You held our hand when we were nobody. You believed in us then. What you say today resonates completely with what we went through 25 years ago. And I'm going to call on you again because we're still at it. Thank you. My topic, PSTD, was build stronger communities, create connections that last. We all want connections that last. We all want to be part of a community. Humans cannot be alone for too long. We love being alone sometimes, but certainly a combo being together is much better. And I would like to thank this young lady as well for being with us. Let's give her applause. Thank you. Aapka naam? Ikra. Ikra. Doing a great job. All right. So just a few pointers in this. From 25 minutes, I'm left with 15 all of a sudden. What are the definition of community and connection? So communities are group of people linked together by shared characteristics and identity. Each of you are sitting at a table, the GSK table and so on. So you're sharing an identity and characteristics. That's not very healthy for an inclusive conference. We should actually mix you up and make you get to know each other, those who do not know each other. A connection is a meaningful and significant sense of belonging. So when you get up from the tables this evening, you have a meaningful connection to somebody you don't see every day. हम अपने घर वालों को we take them for granted. घर की मुर्गी दाल बराबर. जो हम कहते हैं उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती. कोई बहुत कंसल्टेंट आता है तो बहुत कुछ फायदा होता है उसका. But what I want to stress on is, what do we need to feel connected to our workplace community? Sure, Musharraf talked about relationships. And yes, I've seen that over the years that relationship to humans is very important these days. And it's not only the Gen Z, it's been there before that as well. In my generation, I feel we had a relationship with ideals. When I was in Canet College, Lahore, we used to talk about idealism. This generation doesn't do that anymore. We link each other. We don't want bonuses and performance management. I'm sorry. I think that's fluff. And it's all going out. Bichare, I feel so bad for people who have to do performance appraisals. How terrible that time. And who is somebody who comes and appraises my performance? How dare they? And how dare I don't know what my performance is? I need to be the custodian of that. Sure, we all have blind spots, but that happens daily. We tell each other, like standing in front of a mirror. Anyway, what do we need? Iska time nahi hoga, Mariam. So I'll just go ahead. What PSTD gave me the answer anyway. मैं आपसे हाँ या ना ले लेती हूँ. मरियम आगे अगर आप चली जाएं फिर presentation mode में आके. What do we need to connect to our communities? So research has shown. इसको आप screen पे कर दें बड़े पे. 2 मिनट लगेंगे. 2 सेकंड लगेंगे. गुजर गए 2 सेकंड. Is trust. Yeah, these are the human qualities and they're absolutely free, by the way. When you trust someone, you're all there. You're completely authentic. You're free of being judged.
ये वाली चीजें अगर हम इदारों में, घरों में, कम्युनिटीज में ले आए. दूसरा हमने क्या किया? प्रोवाइड सेफ स्पेसेस फॉर डायलॉग. Again, free of judgment, because I work with a lot of youth, and the biggest fear that youth had is being judged. And that's why they don't open up in their own homes with their families. Because the family judges them so quickly according to LKKG. Log kya kahenge? So they go into Facebooks and their Instagrams and they put themselves up. So they want to be heard. Oh, the new selfie portrait image, my self-esteem has gone up according to the number of likes I get. And the third is to encourage collaborative initiatives. We want to be heard before we want to share. And we all have ideas. Humans have ideas. Any of you want to say कि ये 3 चीजों में से मुझे एक नहीं चाहिए? कोई हाथ उठाए. कोई है ऐसा जो कहे नहीं मुझे तो ट्रस्ट नहीं चाहिए? कोई है? नहीं. अच्छा, कोई ऐसा है कि मुझे बात करनी है लेकिन मैं तो सहम के बैठी रहती हूँ, कोई मुझे जज ना कर दे. Would you like to be rid of that kind of mindset? कोई है ऐसा कि नहीं करो मुझे जज? Okay, no hand. You want to be part of something big, larger than life, that takes you and keeps you excited beyond your grave. वो वाली चीज. Everybody wants that. ये इंसानी ख्वाहिशात हैं. तो इन 3 चीजों से कम्युनिटीज बनती हैं. अच्छा, बड़ा आसान तरीका क्या है? अगर मुझे चाहिए तो सबको चाहिए. मेरे गुरु हैं अब्बास हुसैन साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी. कहते हैं what is most personal is most universal. आपको कोई चीज अंदर गहराई में लग जाती है तो बस उसी पे निकल जाएं, तो सबको भाएगी. तो अगर ये 3 ट्रूथ्स आपके लिए कायम दायम हैं and they're necessary for you, then practice them and you'll build communities. However, others also want the same thing. So in different forms. What are the forms? Connection, even if they are different backgrounds. वही उमर वाली बात, ascent वाली. अब why don't we take people along with us? Where is the problems in the ascent process? Do we give them respect? But we want respect. देते कितनी है? How much do we give? But we all want it. How much the empowerment? The prefix EM means my power. How much of my power do I give away and contribute to mutual growth, not just my growth, not just organization, but Pakistan and the globe. The earth is precious to me. All right. Now, what stops us? The gap is what I'm going to be. हम औरों को क्यों नहीं चढ़ने देती? अच्छा, again, my 32 years in this field, what is the problem with Pakistan that I've identified through sports? Very easy. Pakistan पिछले Olympics में किस event में जीता था? कौन सा हमारा gold medalist था? Javelin. शाबाश, बिल्कुल. और हमारे international feats and successes क्या हैं? We are great at snooker. We are good at weightlifting, boxing, golf, chess. World class. Now think, all these sports are individual games. The moment we come into a team formation, khatam, game end. We can't play together. The insecurities we have of being part of a community, those insecurities come from a very early age of being taught biases. Remember, इंसान का बच्चा बायस के साथ पैदा नहीं होता, हम सिखाते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल, लिटिल एक मासी जो मेरे बच्चे को पूरा दिन नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती है, लेकिन जब शाम का टाइम आता है बच्चा सोफे पे बैठता है, मासी इन पे बैठती है, और कॉल क्या है? इंसान सब बराबर हैं. But the optics are more powerful than the words. सफाई निफ्स ईमान है, very powerful. The optics क्या हैं? आप बैनर लगा दें, उसके नीचे देख लें क्या होगा. So that's why my Pakistani passport requires so many visas. And even then I am put sidelined when I get to the country to get into another line to be checked out. Because मेरे call और fail में फर्क है. बस यही मेरी community की sense
नहीं मुझे करने देती. So let's look at this gap, which is इंसान का दिमाग. Since this is a workshop style, I'll give you some tools. हमारे दिमाग में जितनी इंफॉर्मेशन आती है वो 4 फिल्टर से गुजर के आती है. कौन से हैं? DDDG. So whatever information we get, उसमें से मुझे जो नहीं सूट करता मैं डिलीट करती हूँ, डिस्टॉर्ट करती हूँ, डिनाई करती हूँ या जनरलाइज कर देती हूँ. And that becomes very dangerous because it insecurities, remember, fear of judgment and all, it upholds me to have the information that I feel confident about. I need to be in control. Check yourselves out. I'm asking you to reflect on what I'm saying. हम दूसरों को क्यों नहीं embrace करते, जब भी डालते दिल से? बर्दाश्त क्यों करते हैं? सिर्फ बर्दाश्त में काश रह जाती है, बर्दाश्त में रिजेंटमेंट्स होती हैं, बर्दाश्त या कॉम्प्रोमाइज. हाय क्या करें, नौकरी करनी है, तनख्वाह लेनी, बॉस की सुननी. वाई भाई वाई? You can be genuine, you can be respectful, you can get the job done, and you can win all hearts. This is what Jim Collins calls the genius of the and. And मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी, बजाय कि मैं या तो ये करूँ या ये करूँ, या बॉस का दिल खुश करूँ या काम करूँ, या निकाल दें अपनी जिंदगी से. सेंस ऑफ कम्युनिटी आती है. So these 4 things lead to what we called biases, and we are conditioned by so many according to what research says. And like I said, हम बच्चों को सिखाते हैं ये. Very sad. तो हम अपने बिहेवियर्स के लिए अगर हम जरा माइंडफुल हो जाएं तो बहुत ही हमें फायदा होगा. ये this leads to stereotyping, which will not let you get up the mountain together. Not at all. So what happens? I'll give you, मैं इशारा बताती हूँ, आप मुझे हेल्प करें. ठीक है? इशारा क्या है कि जी अगर मैं दुआ ऐसे करती हूँ तो मैं कौन हूँ? क्रिश्चियन. अगर मैं दुआ ऐसे करती हूँ तो मैं कौन हूँ? Yeah, I think you can't, some can't see me from the back. और अगर मैं दुआ ऐसे करूं तो मैं कौन हूं? ठीक है, आपने मेरे हाथ के इशारे पे फैसला कर लिया कि मैं कौन हूं, and accordingly you will treat me. This is called generalization and stereotypes. अगर मैं ऐसे करके दुआ करती हूं तो क्या मेरा रब मेरी नहीं सुनेगा? मेरे रब को कोई मसला है या साथ वाले को मसला है? I was roaming around as a tourist in Paris one day. फिर मुझे 1:30 बज गए थे. वो ये जुमे की नमाज का टाइम है. सामने मुझे सेंट पॉल कैथीड्रल नजर आया. मैं अंदर चली गई, मैं वहां नमाज पढ़ ली. मुझे पता है मेरे रब को कोई मसला नहीं है कि उस पे गुंबद है या ऐसी छत है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. गुंबद इसलिए बने थे क्योंकि गर्म मुल्कों का आर्किटेक्चर ऐसे होता है, उसमें हवा चलती है. मस्जिदों में आर्चेज होते हैं ताकि फ्लो करे हवा गर्मी के लिए. गिरजों पे ऐसे छत होती है, ठंडे मुल्कों का आर्किटेक्चर है ताकि बर्फ फिसल जाए, ज्यादा सरफेस पे हीट हो. अंदर से लकड़ी होते हैं बिकॉज वुड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. एंड वी हैव मेड दीज फॉर्म्स पार्ट ऑफ आवर identities of what we stand in our religions or whatever communities. That is the sad part of it. जहाँ हम stereotype, ऐसे कराची में बड़े stereotypes हैं, शायद आपने भी सुने हो, हैं बर्गर बच्चा, और कोई याद आ रहा है आपको? Typical कराची type. अच्छा, इसमें हम बड़े jokes भी करते हैं. I belong to Peshawar. And I have a lot of respect for all peoples, but having lived with Pathans, I respect them greatly. So when I hear a Pathan joke, it really hurts me very badly. एक वर्कशॉप में मुझे खातून मिली थी, कहती हैं मैं बिहारी हूं और मैं एक जुमले से तंग आ गई हूं सुन सुन के, जो कटे नहीं आरी से वो कटे बिहारी से. Right? Now these are actually abusive to the people that they're directed towards. हाँ, तो यहां भी पुल के इस पार, पुल के उस, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. ये लैंग्वेज हमें सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं, दिस इज नॉन प्रोफेशनल, बल्कि घरों से बाजार निकालनी. सेंस ऑफ कम्युनिटी, वो जो ट्रस्ट अभी आपको बात की थी, इंक्लूजन, हाउ कैन वी वर्क कोलैबोरेटिवली टुगेदर, उसके लिए दीज आर हार्मफुल थिंग्स टू बी लुकिंग एट. आप कहनी चाहिए दोस्तों में बैठ के ही तो कर रहे हैं, करें, लेकिन पूछे तो किसी को नुकसान है, फायदा है, क्या हो रहा है.
अब देखिए ये मैं आपको क्या क्या दिखा रही हूँ, ये कैरेक्टर्स जो हैं, पहले क्या आया था, पीछे जा सकते हैं इसमें, हाँ, मासी। मासी को देखते ही आपकी क्या लैंग्वेज होती है? क्या वही होती है जो बॉस के साथ होती है? बॉस की और जो मासी का जो सलाम है उसकी क्वालिटी में फर्क है। क्यों? दोनों के दिलों में इज्जत की कम या ज्यादा जरूरत है? एक कंपनी में मैंने देखा किसी ने अपने ड्राइवर को बुलाया, इधर आ, सामान चुक। कभी उसने अपने बॉस को नहीं बोला, इधर आ, फाइल चुक। क्यों नहीं कहा? बिकॉज एक से कुछ चाहिए और एक से नहीं चाहिए। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स, एंड दैट्स व्हाट डिलीट्स, डिस्टॉर्ट्स and my behavior and spoils my relationship. इसी तरह पुलिसमैन के साथ, कभी पुलिस वालों को आपने, एक दफा कुरंगी में मैं जा रही थी, बड़ी सख्त गर्मी थी, तो एक पुलिस वाला चौराहे पे खड़ा हुआ था। मैंने सलाम किया, मैंने कहा आप दिन में पानी कहाँ पीते हैं, आप टॉयलेट कहाँ जाते हैं? वो पुलिसमैन खड़े खड़े चौराहे पे रो पड़ा, कहता है आज तक हमसे किसी ने हमदर्दी नहीं की। क्योंकि जहन में आता है पुलिस वाला ये तो वो करता होगा, दूध वाला है तो क्या करता होगा, पानी डालता होगा। शायद आपकी जिंदगी में कभी किसी ने डाला भी नहीं है, लेकिन वो सुनी हुई कंडीशनड बात चल रही है तो यही ख्याल आता है। और ये ख्यालों का जो सबसे बड़ा इंसानियत के दुश्मन है ये, they will not let you ascend, neither will they ever let anybody else ascend because of our behaviors that become discriminatory. I close with the fact that reflect on your values. चाहे अपने माँ बाप से, टीचर्स, मौलवी साहब, किसी से भी, दोस्तों से, what values have you learnt in your life which are to be, what are the values? Respect, great. Or punctuality, be humble, fantastic, thank you. Or पेशेंट, एग्जैक्टली, सबकी यही है। और अगर मैं चाइना चली जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चली जाऊं, अफ्रीका चली जाऊं, वहां से पूछो यही लफ्ज आएंगे। कोई आप में से ऐसा है जो कहता है हाँ हाँ मुझे तो झूठ पसंद है, बोलो मेरे साथ, मुझे बेइज्जती पसंद है? किसी को नहीं पसंद, दुनिया में किसी को नहीं पसंद, राइट? वी हैव यूनिवर्सल वैल्यूज। नाउ व्हेन एवर यू हैव अ थॉट about somebody at your workplace, at home, anywhere, your thought then takes you to making a decision which transfers into action. इसके बीच में आपके biases आ जाते हैं। अगर आप सिर्फ क्वार्टर सेकेंड, न्यूरो साइंटिस्ट्स ने कहा है कि बिजली एट 186,000 माइल्स पर सेकेंड, इधर से जो मेरा हैवानी दिमाग है, जो खुद गर्ज है, अशरफ दिमाग पे पहुंचता है, जिसको मैं 5 दफा दिन में नीचे लगाती हूँ। हिंदू लोग बिंदिया पहनते हैं, क्रिश्चियन लोग इबादत करते हुए इशारा इधर करते हैं, क्यों? कि मेरे अंदर इंसानियत यहां है। अगर मैं क्वार्टर सेकेंड पॉज कर लूं तो आई विल रिफ्लेक्ट, मुझे ईमानदारी चाहिए तो इसको भी चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए तो इसको भी तो चाहिए। And my biases are out of the window and I become the symbol of a humanity which I buy by just practicing it. And that's the message I leave. What जो खुद को चाहिए वो प्रैक्टिस करो। इसको कहते हैं ज़मीर, कॉन्शियसनेस, और इसी को कहते हैं मजहब। अल्लाह आप सबको मुबारक करिए। Thank you so much for having me over. Allah Hafiz. Thank you. May I request you to remain on stage? We can't just let you go after all those wonderful words. And another round of applause, please. Shri Naqvi Sahiba ne unconscious biases की बात की है. How many of you, in a show of hands, did manage to look inward and perhaps found a bias inside you? Can you raise your hands? I was reflecting. Great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. If any one of you were to raise your hands for the next one, be careful what I'm about to say. How many of you don't have a bias? Any one of you? Biasless हैं? कोई bias है ही नहीं? Great. मेरी तड़ी की वजह से शायद आप रुके होंगे, but the truth remains we all do. Which means that's the work we need to do. We need to be able to find it, where it comes from. Thank you very much, Shiriji. Very rightly said. She's talking about we're in the most cosmos city of our country. We see every kind of person, which is the beauty of Karachi. Please embrace it, not fear it.
In Punjab, they say other weird things. वो कहते हैं ना शेखों से हाथ मिलो उंगलियां गिन लो. हमारे एक दोस्त हैं बट हैं, वो मुझे ताना देते हैं, मैं उनको देता हूँ. वो कहते हैं कि जी राना कोजा मिले मार दो, राना सोना मिले तो मार दो. मैं कहता हूँ बट कोजा मिले तो मार दो. But these are things that we've brought down. We need to be able to not just humor them, but be conscious about them and address them. So thank you very much for saying that, Shirin ji. I'm going to request Javed Gilani to please come on stage. Javed sir, if you can come on stage and give a nice memento to mark this occasion. A round of applause, Javed sir. Thank you, Javed. If I can request you to remain on stage. A round of applause to Shirin Naqvi Sahiba as she comes off stage. Thank you. There are two quick sponsors that we'd like to acknowledge before tea. May I please request someone from the Salim Habib University as our sports sponsor, Dr. Shumaila Birnie, to please come on stage. Thank you, Shumaila ji. Round of applause. Ji Date, welcome, please. Our support sponsor. Round of applause, please. Thank you. The Salim Habib University and PSTD has gotten together and done marvelous work, things that you can look into. I'd request you all to also look at the research. And this for me was very exciting to learn the research that they have done together, research that you can benefit from, thanks to PSTD in collaboration with Salim Habib University. A round of applause for that research from which you will be benefiting. Again, get it onto the QR codes, and you'll get it from there. Can I also request from DP World, our support sponsor, Sayyid Adil Ahmed Naqvi Saab, to please come on stage. There comes Adil Saab, a round of applause. Thank you ever so much, DP World. शेयर्ड असेंट है. अगर एक टेबल तालियां बजा रही है, हम सब तालियां बजाएंगे. There you go. Shared ascent. मतलब तालियों में भी कंजूसी. Come on. Thank you very much, Saab. Thank you, DP World, and thank you, SHU. Folks, ladies and gentlemen, you will have QR codes being shown after every segment, after plenary or workshop and speech. We'd request you, urge you, beg you to please scan this QR code and share a quick slide of feedback on each segment. This is how PSTD has gotten all their events, Connex, WIPCon, improve upon improvement. So your feedback is needed for each team and organization, each generation, each function that comes. We get to have PSTD hear this. Now, of course, one of the most important things, addiction legalized. We're going towards the tea break. Which Pakistan is not technically a break. It's a parallel decision-making ecosystem. While you're in that parallel decision-making ecosystem, I request you all to rub shoulders, interact with each other. As Shirin Naqvi Sahiba very rightly pointed out, here's your opportunity. Sab ikatthe hue hain, mile ek dusre se from different organizations and people that you can. And while you're outside, my humble request, please do visit the PSTD booths. Learn about Transform X. This is the practical framework of organizational transformation from diagnostics to development. And you can see how your company can design its own journey. Connect through the QR codes on the table again and have that initiatives going. We are holding our break for 20 minutes. You'll have 10 minutes to settle in and settle out. We will begin at 11 a.m. sharp. Please enjoy your tea responsibly. Thank you.